Please sit down. नाव न सांगता थोडक्यात परिचय द्या. Do you speak in English? That is not a problem. Introduce yourself. Because you are in UPSC, you speak in. I am from Jalgaon, Yeah. district Golani. I have done my 10th from Dargah High School, Dargah. In year 2009, I got 86%. I have done my 12th from Jalgaon Middle School, Golani. I have got 77%. And I have done my graduation from Jalgaon Open University, Nashik. And presently I am working as an assistant intelligence officer in under training officer in Hadaf. Yeah. What's the work profile of the assistant intelligence? Assistant intelligence officer is nothing but the field posting in the intelligence department. The basic work is to collect the intelligence, intelligence to protect the, means to avoid the conditions which may come in further and which make the problem of law and order. So to prevent the law and order, so that is the work of assistant intelligence officer. Okay. Now, do you apply for the assistant commander and in the first preference to which post? Yes. Why? What's the reason behind it? Yes, sir. The first part is that my one cousin is working as an constable in CISF. He is currently posted in Jharkhand. Also, CISF is an important guards the important installation, which are the important as far as our country's economic interests are concerned. Example, nothing but the ports, as like JNPT, the airports. Most of the airport security is concerned with the CISF. Also, it got mines areas, coal field areas, also oil field areas. So those, and also it gives the security to the, gives fire security also. They have their separate fire wing, and also it gives the security to the private installations. Example, Infosys, and also they are giving the security to the Reliance refinery plant, oil refinery. So it guards the economic installations. I know that because if you are only a security provider agency, Yeah. but why you not giving the first preference to BSF or CRPF? Because it is directly in a field work. No? Yeah. Then my choice is that I'm if they are selected or recommended. But your second option is SSB, not the CRPF, not the BSF. SSB is also doing the same thing as a field job. So if they select me anywhere, I am ready to serve anywhere in the country. Okay. What's the role of the SSB and what's the role of the BSF? Okay. The basic difference is between, they both guide the boundaries, international boundaries. But in case of BSF guard the Indo-Pak and Indo-Bangladesh border. Yeah. And in case of SSB, it guards Indo-Nepal and Indo-Bhutan border. Who is the DG of the SSB? Sorry, sir, I don't know. CISF? The name of the DG? Don't know, sir. Because if you are FAR, Yes, sir, first but, preference, so it is mandatory to know the names of Yes, the sir. DG. I'll find out it. Executive chief. Yeah. I'll find out it. But recently I didn't get too much time to have studied. So. Okay. Last attempts you have also appeared for the interview. Yeah, last time. But why you not I selected? shot 10 marks. What the reason? Yeah, some less marks in the paper too. Okay. Do you hope that you will? Yeah, this time I'll definitely clear it. Okay. Good things. I hope that, and I am addressed to you also. What is your favorite hobby? Hobby. Hobbies. What's your hobby? Watching to movies, sir. Movie. Which types of movie do you see? Recently I told you earlier that I am doing the training. So at every Sunday they show us a movie related to intelligence, sir. Now just Yeah. Tanaji also movie related to intelligence department. Yes, intelligence. But How it is related with your department? Please explain it. I haven't watched it, sir. You watch it, na? I haven't watched it, sir. You haven't watched it. Okay.
But you are knowing the concept of the Tanaji, na? Marathi movie. Yeah. Concept means, according to my knowledge, Mm. it is nothing but the Battle of Sinhagad. Yeah. So, Battle of Sinhagad. What's the Article 370 is a good. Yeah. The skip of Article of 370 is a good, or what your Yes, sir. It is better to scrap that article. Yeah. Because it was enacted in 1951. Mhm. So after that the conditions are, मतलब जो समय Yeah, you speak in Hindi. उसके बाद जो कंडीशन है वो धीरे धीरे से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती जा रही है. सो वो स्क्रैप करना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर उनको मतलब स्पेशल प्रोविजन वो टाइम में ठीक थी जब तक वो जो सिचुएशंस थी उसको हैंडल करने के लिए स्पेशल प्रोविजन चाहिए थी तभी. बट उसके बाद जो कंडीशन है वो कम होती गई है. तो बाद में वहाँ उनको मतलब इंडियंस होने की फीलिंग होनी चाहिए और उनको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि जो मतलब उनको स्पेशल प्रोविजंस जो दिए जा रहे हैं वो उनके प्रॉब्लम्स की वजह से, ना कि वो इंडिया से अलग बिहेव करें. इसके लिए उनको जो स्पेशल प्रोविजंस है वो धीरे धीरे कम किए जाते हैं. The last aspirants, I had asked the questions related to Nepal statement. Nepal Yeah. official statement given that we are taking the middle role between the India and Pakistan. Yes, sir. What is your thinking on that point? So according to me, the means on what issues? Yes. The role of the 370. Nepal. On the 370. Yeah. Okay, sir. According to me, Pakistan have gone to every countries, most of the countries in the world, to negotiate between India and Pakistan as a मतलब मध्यस्थी के रूप में वो जाने मतलब लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा है. Okay. But that is our internal problem. Mhm. So we can solve it by bilaterally. No other internal party should not be there. Sir. ठीक है. अभी एक चाइना का जो मूवमेंट चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के तरफ से, मैं आपके साथ हिंदी में बात करूँ ना, Yes, sir. तो आप मुझे बताइए कि चाइना का जो रिलेशन है, जैसा अभी उन्होंने श्रीलंका के साथ कुछ रिलेशन बनाया, पाकिस्तान के साथ बनाया है, इधर वो जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट क्या लगती है आपको एज एजेंसी के हिसाब से आप? सर एक्चुअली ये क्या है कि चाइना वांट टू बी ए सुपीरियर इन द एशिया पैसिफिक रीजन. और एशिया में अभी दो ही कंट्री ऐसी है कि जो प्रॉपर मतलब जिनके पास पावर हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, वो इंडिया और चाइना है. तो चाइना ये क्या कर रही है कि आसपास के जो देश है, आसपास की जो कंट्रीज है, उनके साथ प्रॉपर रिलेशन, उसमें से स्ट्रैटेजिक रिलेशंस मेंटेन करना चाहती है. उसकी वजह से उनका वहाँ पे जो मतलब उनका जो पावर है वो पावर मेंटेन रह सके और कोई भी सिचुएशन आए तो उसको फेस कर सकते हैं. What's the role of the assistant commander in the paramilitary force? Okay, assistant commander general duty is to means maintain the जो कंपनी को हैंडल करना होता है. Yes. उनके जो इश्यूज है और सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना होता है, और जो उनके अंदर जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी पूरी देखभाल करने की जिम्मेदारी उनकी होती है. आपको सबसे लास्ट का ऑप्शंस मिला बीएसएफ, तो आप उसमें खुश रहोगे? Yes, sir. I'm ready to sir, and I'm happy because I want to join the uniform services, so it will be okay for me. If you are interested in the uniform services, why you are not applied for the Maharashtra cadet services? Yeah, I have applied it, but I short for the 5 marks for the interviews. In PSI? No, in UPSC. In MPSC? Okay. But you are not applied for the PSI? No, sir. Okay, why not? So I have given the PSI, but I couldn't make it up for the final process. Do you think that the internal जो पॉलिसी अपनी गवर्नमेंट की वो कुछ माहौल खराब कर रही है? ऐसा लगता है आपको गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी, कुछ डिसीजन है कि जिससे माहौल खराब हो रहा है? Sorry sir, I can't get your question. जैसे कुछ डिसीजन लिए गवर्नमेंट ने, जैसा सीए डिसीजन लिया है, तो माहौल खराब हो रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको? सर मुझे तो लगता है वो जो एक्ट है वो अच्छा है. अच्छा. माहौल खराब होने का मतलब माहौल तो खराब नहीं हुआ है,
मतलब खराब तो वो हुआ है, पर उसका वो रीज़न नहीं है, वो एक्ट अच्छा है, सिर्फ उतना ये प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसका एक सोल्यूशन ऐसा भी हो सकता था कि गवर्नमेंट ने एक्ट फाइल इनैक्ट करने से पहले जो प्रोमिनेंट पीपल है इंडिया के, मतलब जो अपोजिशन वाले लीडर है या कोई अदर पार्टी वाले लीडर है, उनके साथ बैठ के थोड़ा सा डिस्कस करके वो इशू हो सकता है। पार्लियामेंट में क्या हुआ? पार्लियामेंट में डिस्कशन तो हुआ सर, बट जो अदर भी अपोजिशन वालों को भी बोलने का पावर था। हाँ पावर था, बोला भी उन्होंने। बोला भी सर, पर मतलब बाकी के भी जो मतलब जो अच्छे बाहर के जो प्रोमिनेंट प्रोफेसर या वगैरह बाकी जो लोग हैं उनके मतलब उन्होंने That means you want a awareness program first, Yeah. then they launch the Yes. GRR laws. Okay, then amendment the laws. Yes. Good things. Your qualification from the YCM, Yes. how it is useful in your forces? So arts, it is from the arts faculty. So it is nothing but मतलब लोगों को हम अच्छे से लीड कर सकते हैं। लीड कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन? आप जो पॉलिटिकल साइंस का जो I have completed from political science and Marathi sir. Yes, yes. Marathi. हाँ। Your mother tongue is Marathi. Yes sir, my mother tongue is और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? Marathi. So as I told you that recently I am undergoing the training, so I can be there's a better physical fitness. I can lead my team better, right? And I can as I am doing intelligence working in intelligence department, so it can be helpful me in my future services. आपको ये लगता है क्या कि do you think that the deputations of assistant commander as IPS maybe or Yes sir. है क्या, अभी क्या होना चाहिए ऐसा नहीं लगता है? अभी तो नहीं है, हाँ, पर ऐसा होगा तो अच्छा होगा सर। अच्छा होगा, ठीक है, तो आप उसका वेलकम करोगे? Yes sir, yes sir. इट इज़ वेलकम बाय यू। Yes. अभी मुझे बताइए कि why the Telangana opposes CAA? उन्होंने कोई रिजोल्यूशन नहीं किया है लेकिन अपोज कर रहे हैं चंद्रशेखर राव, क्या रीजन है उसका? यू डोंट नो, ओके। आपके हायर के बताए असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर की डीजी तक? असिस्टेंट कमांडर, उसके बाद डेप्यूटी कमांडर, देन सेकंड इन कमांड, देन कमांडेंट, देन सीनियर कमांडेंट, देन डीआईजी, देन आईजी, देन एडीजी एंड डीजी। ओके। What is the Maharashtra problems? Maharashtra just faces, please mention the two problems. Okay, farmer suicides and water scarcity problems. Okay. Do you think that the election commissions wants the Aadhaar card link with the voter card? That is good things or bad? Aadhaar card links with Voter card. It is good for the nation. Yes sir, it is good for the nation because And how it is good? because in case of in the Aadhaar card they take our biometric and iris scan. So by that no other person will vote. Means what happened before this, the proxy voting is on the lead. मतलब जो झूठा मतदान किया जाता था, मतलब कोई जो बोगस मतदान, हाँ बोगस मतदान जो प्रॉक्सी वोटिंग जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आपने जो आधार में क्या है आइरिस स्कैन और बायोग्राफिक बायोमेट्रिक होने की वजह से जो प्रॉपर आदमी है उसका ही आइडेंटिफिकेशन होगा और वही वोट कर सकते। मुझे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताइए। मुझे तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ। और मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब ये जो डायरेक्ट फंडिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो डायरेक्ट फंडिंग ना होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स दिए जाते हैं। अभी फिलहाल तो SBI इशू कर रही है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इतना। चलो ठीक है, अभी दोनों को कंट्रोवर्सी में आपसे लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरा, पहले मैंने आपसे पूछा था कि आधार कार्ड ये वोटर कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो आपने कहा ठीक है, लेकिन कोई भी अपने मोबाइल पे डेटा
जो है वो अपना पर्सनल डेटा है वो देखता है, उसका फंडामेंटल राइट्स है। Yes, sir. जैसे उसका कुछ भी आइडिया तो वो पब्लिश नहीं होना चाहिए, उसका फंडामेंटल राइट्स Yes, है। sir, yes. लेकिन हैकर्स यदि वो डेटा वोटर कार्ड के साथ जाता है तो हैकर्स उसको हाईजैक कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। तो उसका फंडामेंटल राइट्स को मतलब एक तरफ से फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ, वो वायलेट हुआ। पर इधर हम चाहते हैं कि फॉर द नेशन इट इज गुड। Yes, sir. तो ये कंट्रोवर्सी को कैसे संभालेंगे आप? सर हम ये तो इतना तो ये कर सकते हैं कि मतलब साइबर सिक्योरिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, मतलब जो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ना कि वो हैक हो सके। इतने तो हम प्रिकॉशंस चलो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मोबाइल में कोई है, मोबाइल में कोई भी वेब लिंक से कुछ भी मटेरियल वो देखता है तो उसका वो क्या है, राइट्स है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहते यस हैं। यस एंड गवर्नमेंट कहते हैं कि इट इज नॉट गुड फॉर द डेड गाइज। तो ये कैसे है? यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी और वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका कि जो भी है वो उसका वो अकेला बैठा है, वो कुछ भी ये कर सकता है, उसको जीने का, रहने का, खाने का, पीने का राइट्स दिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन ने। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट उसको बैन करती है, ऐसा क्यों? वो पब्लिक में नहीं, वो खुद भी करता है तो भी गवर्नमेंट ऑब्जर्वर बन के उसके ऊपर ये कर रही है, वॉच कर रही है। तो इससे क्या कहेंगे आप? मतलब जो उनका डाटा है, पर्सनल डाटा है, हाँ। वो लिंक करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। अभी वही मैटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चल रहा था कि जब लास्ट गवर्नमेंट में एक इजराइल सॉफ्टवेयर था, क्या नाम उसका, कि जिसने डाटा व्हाट्सएप का डेटा जितना भी था वो उसे चोरी कर रहा था कि एक बार लीक हो गया, वो क्या लिख रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, क्या देख रहा है, वो सब कुछ वो वहाँ पे इकट्ठा करके वो मटेरियल सप्लाई करता था जिसको चाहिए उसको। सर मैं आधार कार्ड के बारे में जो आपने पूछा था सवाल, मैं उसके बारे में इतना ही बताना चाहूँगा कि हमने जो आधार कार्ड क्रिएट करते समय जो हमारी इंफॉर्मेशन दी थी वो तो गवर्नमेंट के पास तो है, एज ए मतलब वो गवर्नमेंट के जो कार्ड, गवर्नमेंट ने जो कार्ड इशू किए वो तो है उनके पास। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ये जो आपने कहा जो इजराइल का जो सॉफ्टवेयर था उससे कुछ डेटा उन्होंने पायरेट किया, तो वैसा नहीं होना चाहिए सर। ओके, दैट इज ठीक है, डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। यस।